The circular motion is classified into two categories. First one is uniform circular motion and second one is non-uniform circular motion. Let's see both the types one by one. First, uniform circular motion. So what is uniform circular motion? So here the name suggests that uniform means constant. So what is constant here? Speed is constant. The circular motion with constant speed is called as uniform circular motion. Now here we can say speed constant, but here we cannot say velocity is constant. Velocity is always variable because velocity is a vector quantity which depends on magnitude and direction. Magnitude of the velocity is constant in UCM, but direction, you can see here in a diagram also. So direction of the velocity is continuously changing as the particle is moving. So here direction changes, therefore we can conclude that velocity is also changing. So velocity is variable. Now here in uniform circular motion, angular velocity is constant. Angular velocity. Now here if angular velocity is constant, then angular acceleration is given by formula d omega by dt. We can write this alpha is equal to d omega by dt, means we can write omega 2 minus omega 1 by t. If omega is constant, then omega 2 minus omega 1 is 0. 0 by t is 0. So here it is 0. The angular acceleration here is 0. Now here tangential acceleration. So tangential acceleration is given by formula r alpha. And here as alpha is 0, so we can say that tangential acceleration is 0. In uniform circular motion, the body having only radial acceleration, no tangential acceleration, that you have to note down. Now here we can write example of uniform circular motion. Motion of tip of hands of a clock. Motion of earth around the sun. Motion of moon. Here centripetal force is the force which is acting along radius and towards the center of the circular path is called as centripetal force, and this force is responsible for keeping the object in moving circular motion. So this is necessary force for the circular motion. Now here this centripetal force is given by a formula. You know that by Newton's second law of motion, F is equal to ma. So F we can write centripetal force, m is the mass, a is the centripetal acceleration. And centripetal acceleration formula is, we already learned, it is v square by r, r omega square or v omega. These three formulas we learn. If I substitute the first formula, we get mv square by r as a centripetal force. If I substitute second formula of the centripetal acceleration, I get mr omega square as a centripetal force. If I substitute mv omega, we get mv omega as a centripetal force. Now example, you can see the example number 1. For circular motion of electron around the nucleus, centripetal force is provided by electrostatic force of attraction. The necessary force in that case is called as a centripetal force. When electron is revolving around the nucleus, the necessary force is electrostatic force of attraction. So therefore, it is providing, this electrostatic force provides the centripetal force for that circular motion. Another example is for circular motion of object tied to a string and revolve in horizontal circle. Centripetal force provided by tension in the string. Third example, for car traveling around a circular horizontal road with uniform speed, the necessary centripetal force for negotiating the curve is provided by force of friction. You know that without force of friction on the curve path, it's very difficult for a vehicle to take the turn. So necessary force in that case is the centripetal force, and the necessary force
in case of vehicle traveling on curved path is a friction. So friction is a centripetal force. Now next one. From this example, it is clear that centripetal force is because of the known interaction. So it is a real force. So it exists, and real forces are coming in inertial and non-inertial frame of reference. It is exist in inertial and non-inertial frame of reference. So work done by this centripetal force is zero, that you remember. In circular motion, work done is zero. Now centrifugal force. Centrifugal force is equal in magnitude but opposite in direction of the centripetal force. So you know that centripetal is towards the center, centrifugal is away from the center. So we can write here a force along the radius and away from the center of the circular path is the centrifugal force. And this centrifugal force is the result of the circular motion. It is coming after the circular motion, that you remember. Now here the magnitude is equal, so same formulas we can write for centrifugal force. Now here examples of the centripetal force, centrifugal force. So passenger in a vehicle observe outward pull on the curve path. So this is due to the centrifugal force. Second, you can see here when the vehicle is taking turns toward this right hand side, passenger is pulled towards outwards, means they are pulled outward. So it is because of the centrifugal force. Now second example is a coin placed slightly away from the center of the rotating gramophone disc slip towards the edge of the disc because of the centrifugal force. So you can see this is a coin. So when this gramophone disc start rotating, then this coin slip away from the center because of centrifugal force. So it moves toward the edge because of the centrifugal force. Now next example is centrifugal force is used in drying the clothes. So you know that in washing machine, basically the clothes are revolved with very high speed. When they are revolved with very high speed, the water drops are thrown off. You can see in a diagram. So when the water drops are thrown off because of the centrifugal force, तो हम बोल सकते हैं कि कपड़े जो है ड्राई हो रहे हैं. So for drying cloth, we are using centrifugal force in a washing machine. Next one, bulging of earth. अगर आप अर्थ देखेंगे, अर्थ का शेप, तो it is flatten at pole and bulge at equator. अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा, ये अर्थ है, ठीक है, ये मैं कंसिडर कर रहा हूं, दिस इज पोल एंड दिस इज इक्वेटर. तो पोल पे जो पोलर रेडियस जो होती है अर्थ की, वो कम होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल रेडियस. आप देख सकते हैं पोलर रेडियस एंड इक्वेटोरियल रेडियस में फर्क है. अभी इक्वेटोरियल रेडियस जो है ये यहां से यहां तक है, ये दिखाइए 12,756, ये डायमीटर दिखाया है, उससे आधा करेंगे तो ये रेडियस मिल जाएगा. तो पोलर वाला वहां पे है 12,714, जो पोलर वाला कम है. तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों डायमीटर में, तो उससे रेडियस वाला डिफरेंस भी निकाल सकते हैं. सो द अर्थ इज बल्ज at equator and flatten at pole due to this centrifugal force. So let's see the distinguish between centripetal and centrifugal force. Many times in a board examination, question is asked distinguish between centripetal and centrifugal. So let's see. So here, so the first point of distinguish is directed towards center of circular path, and it is directed away from the center of the circular path. Second point, it is a real force. Centripetal is a real, and here it is a pseudo force. Now third point, centripetal is exist due to interaction between two bodies, and it exists, the centrifugal exists due to acceleration of the frame of reference.
So you know that here real forces are coming due to the actual interaction, and pseudo forces due to the acceleration of the frame of reference. The same point is written in the point number 3. Now here the point number 4, it exists, centripetal exists in both frame of reference. Real forces are coming in the both the frame of reference, but pseudo forces are coming only in the non-inertial frame of reference. Now the next one is the vector form of the formula. So here minus m omega square r bar is the centripetal force, and here the plus sign because they are oppositely directed. Today's session we start conical pendulum. Now first thing, what is conical pendulum that we have to learn. So before conical pendulum, everyone know that what is simple pendulum, that we discuss first. Simple pendulum means a bob hang to a support by a string and moving to and fro like this, once to this side and once to that side. That is the simple pendulum. Now same bob is rotated in horizontal circle, then this is called as conical pendulum. So basically, so you can see in a diagram a conical pendulum. So the bob is moving in a horizontal circle, then it is called as conical pendulum. Basically, conical pendulum is a simple pendulum. So for a bob, such a motion is given, it describes a horizontal circle. Now here we have to obtain expression for period and frequency of conical pendulum. Now basically we have to consider a bob of mass m hang to a support by a string whose length is L. Now we consider that bob. Now here this is a bob. Now we have to consider forces acting on bob. So forces, first force acting on bob is a weight mg, which is in the downward direction. And the second force is tension in the string. So for tension, we are using T0 here. So this is the T0, tension in the string. So why T0 we use for tension? The reason is the title of the article is expression for the period. So for period, we are using capital T. So we cannot use T for tension. So I use T0 for tension. Now after that, so here downward force mg and along the length of the string tension. Now we have to resolve here tension into two components. So we can resolve tension into two components. This is the first component and this is second component. So this angle is theta. So this component is T cos theta, and this we can write T sin theta. So this is the second component of the tension. Now by using this diagram, we have to write equation 1 and equation 2, and that we have to process to get expression for period and frequency. You can see here component diagram. So this is a tension T0. It is resolved into T0 cos theta and T0 sin theta, and this is the radius, and this is the weight mg, you can see, which is acting in a downward direction. Now here we can say that T0, now here T0 is resolved into two components, and this component T0 cos theta is balanced by mg. So you can see here this component T0 cos theta and this is mg. They balance each other. So we get equation number 1, T0 cos theta is equal to mg. This is equation number 1. Now second here, this T0 sin theta. So you can see this component T0 sin theta. It provides centripetal force. You know that centripetal force is along radius and toward the center. If you see this diagram very carefully, this T0 sin theta is along radius and toward the center of that horizontal circular path of the bob. So here this T0 sin theta provides centripetal force. So we can write centripetal force is equal to T0 sin theta. So centripetal force is written by mv square by r, or we can use mr omega square. We can use any one formula or we can write both.
So here we get equation number 2. Now after that, now here I can use this equation like this: T0 sine theta is equal to mr omega square. So this I can write as equation 2. Now we have to process these equations. So dividing equation 2 by 1. So one side we consider here, this is equation 2, this is equation 1. So this side of equation 2 and this is side of equation 1. Now here T0 get cancelled. We get sine by cos and left hand side. Right hand side here m get cancelled. So we get sine by cos is tan. So tan theta is equal to r omega square by g we can write. Or we can continue with the sine by cos also. So if you want to write it sine by cos is tan, then you are welcome, you can write it also. Now here by using this equation we can find out omega square. So omega square is equal to, we transfer this g to this side. So it is g is divided to this side. So this side it is multiplied and r is multiplied to omega square. To this side it is divided. So we get omega square. Now we can write omega also by using that. So omega is equal to under root. You can see here. So I written here this g by r, then this is omega square. From figure, we can write sine theta is equal to r by l. So you know that this is the type of diagram. So this is theta. Sine of theta means opposite side, which is r, and opposite side divided by hypotenuse. Hypotenuse is the length of the string, so it is l. So this is bob is moving like this. So r by l. So we can write r is l sine theta. Hence I can write here r is equal to l sine theta. Instead of this r, we return here l sine theta. Then this sine theta and sine theta we can cancel. We get omega square is equal to g upon l cos theta. So omega I can write it here under root g upon l cos theta. So by using that we can write period very easily. So hence period of revolution of the bob is, period, basic formula of the period is t is equal to 2 pi by omega. Now this omega we have to substitute in this equation here. Then after substitution we get the final expression for the period. Now t is equal to 2 pi divided by this omega we are written. Then after that we can rearrange the term and we can write t is equal to 2 pi under root l cos theta by g. ये जो l cos theta है हमने ऊपर लिखा है, तो ये मैथमेटिकली हमने सिर्फ रीअरेंज किए टर्म यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है. एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम. तो यहाँ पे अगर आपने इससे पहले कभी आपने सिंपल पेंडुलम के पीरियड का फॉर्मूला देखा होगा तो ये फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी. और कोनिकल पेंडुलम के लिए क्या मिल रहा है, l cos थीटा बाई जी. तो यहाँ पे बहुत बार इन एनी एमसीक्यू द कंपैरिजन में बी आस्क्ड अबाउट द कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम. तो कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम का जो पीरियड है उसका कंपैरिजन करेंगे. तो सिंपल पेंडुलम के पीरियड में L है फॉर सिमिलर लेंथ फॉर पर्टिकुलर दिस एंगल. तो आप इतना याद रखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम जो आएगा ये इतना आएगा, बिकॉज कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है. तो आपको ये मिल जाएगा सिंपल पेंडुलम का पीरियड. तो यहाँ पे हमें पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम मिल गया है. सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी आल्सो. सो फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियड. सो एन आई यूज फॉर फ्रीक्वेंसी is equal to 1 upon period. So n is equal to 1 upon, we are written formula for the period. Now we rearrange it and we can write the final expression for the frequency of revolution of the conical pendulum, and we get 1 upon 2 pi under root g upon l cos theta, and this is expression for frequency of revolution of conical pendulum. Now we have to consider a mass m tied to a string and revolve in a vertical circle of radius r. So you can see in a diagram. So this is a mass tied to a string and revolve in a vertical circle of radius r. Now you can see here, so different points. I consider the highest point by A, lowest point by B, and the midpoint by C and D. Now at point A, at highest point, you can see this is a tension.
Tension is along the string. You remember one thing is tension is along the string and toward the center. So this is the tension at A. And the weight at A, weight of the object at A is downward. So you can see the direction of weight and tension. So tension is always along the string that you remember. So this is tension at D, tension at C, tension at B. But weight always in a downward direction. When we are talking about the position C, weight is a downward. This is the direction of the weight. So position B, weight is this. D, you can see the positions, different position and weight, direction of the weight at every point. So direction is same everywhere. Means same means what? It is downward. Now force is acting here. We discuss weight and tension. Now here, magnitude of the tension changes here. Tension is different at different point. So that we have to discuss in the coming article. So first we discuss about the point A, means uppermost position. Now if we are talking about the uppermost position, so I am showing here a diagram with the only uppermost position. So at A, you can see a diagram. At A, we can write necessary centripetal force provided by resultant of these two. And these two, tension and mg, they are in downward. So tension at A plus mg gives us centripetal force. So we can write an equation here. So TA plus mg gives us centripetal force. Now here centripetal force, we can use a formula mv square by r. So we get a formula. So tension at A plus mg is equal to centripetal force is mv square by r. Now I specifically use here VA. Why VA? Because speed at every point is different. So we have to specify the point. So speed at point A is VA. So we get this equation 1. Now after that, we have to process this equation and we have to obtain formula for speed at A. Now here at highest position, tension is minimum. So tension is minimum. Minimum means how much? Minimum means 0, not less than that. So tension we consider 0. Tension at A, 0. Now here we can substitute tension at A, 0. Then we get equation number 1. mg is equal to mva square by r. In that also we can cancel the common term. Get cancelled. R is shifted to this side. So we get here rg is equal to va square. So this is va square. So we have to obtain an expression for va and it is under root rg. So speed at point A is under root rg and this is minimum speed. This is the minimum speed at point A. Why minimum speed? Because we consider tension is minimum at point A, then this is the minimum speed. Minimum speed means this is the essential minimum speed at point A to complete the vertical circular motion. If speed is less than under root rg at point A, then the object fall down. It does not, means it is unable to complete its vertical circular motion if speed is less than this. So on this article, question may be asked like this. If bucket containing a water, a whirled in a vertical circle, find out speed at topmost position such that the water does not spill out. अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह अगर ऐसे बकेट होती, उसमें पानी है, बकेट के अंदर पानी है, then at topmost position पे ऐसा minimum speed find out करो कि बकेट वाला पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए. Listen, you know that if we revolve the bucket with larger speed, water does not spill out. But अगर इस bucket का speed कम होगा, धीरे से घुमाएंगे तो पानी तो नीचे गिरने वाला है. तो how much speed at highest point? तो इतना होना चाहिए under root rg. If the speed is less than that, the water spill out. So that you remember. Such kind of question may be asked in the MCQ, may be asked in the problem also. So you have to remember this formula under root rg. Now after that, next point we have to consider, and it is lowest position. Now again at lowest position we obtain expression for speed. So I shown a diagram with the lowest point only. The lowest point is B. Now at point B you can see a direction of mg and direction of the tension. So resultant of these two provide the centripetal force.
Now you can see here they having a different direction, so resultant is tension minus mg. They provide the centripetal force. So I can write here, so tension at B minus mg is the centripetal force. So tension at B as it is, mg as it is, centripetal force I can write at point B. So it's a point B, so velocity I written Vb. So mvb square by r. So this is the formula for centripetal force. Centripetal force is equal to Tb minus mg. And now by using this, we have to obtain speed at point B. अगर यहाँ पे in the previous article we use tension minimum, so minimum value we substitute 0 and then we obtain the speed. The same logic we cannot use here. So you know that tension at lowest point is greater than the highest, but how much more, how much larger maximum? Basically how much the tension string bear, that amount. We cannot decide the maximum limit of the tension here. So we are not using that logic to obtain speed at point B. So we can use here conservation of energy. So by conservation of energy, when the point mass is coming from topmost position A, so when it is coming A to B, so we can write decrease in the potential energy. So at point A, it has a potential energy, and the potential energy is mgh. So when it is coming down, so we can write that potential energy is changed into the kinetic energy. So we can write here decrease in the gravitational potential energy is equal to change in kinetic energy. अभी यहाँ पे B पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 0, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? mgh माइनस 0, mgh ही आएगा. अभी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी एट A आई कैन राइट 1/2 mva स्क्वायर, एंड B पे काइनेटिक एनर्जी मैं लिखूंगा 1/2 mvb स्क्वायर. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों का डिफरेंस आएगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है. सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था mgh एंड यहाँ पे था 0, तो दोनों का डिफरेंस आएगा mgh माइनस 0. mgh माइनस 0 इज mgh. बट हाइट कितना है इस पॉइंट का? हाइट हम लोवेस्ट पॉइंट से मेजर करते, तो ये r है और ये r प्लस r 2r. तो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा mg इंटू हाइट, हाइट इज 2r, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे 1/2 mvb स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा 1/2 mva स्क्वायर. तो दोनों का डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं. उसके बाद सो आई कैन टेक हियर 1/2 m कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन लिया तो हमें ब्रैकेट में मिल जाता है vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर. नाउ वी कैन कैंसिल द कॉमन टर्म, mm गेट कैंसिल. सो आफ्टर कैंसिलिंग दैट, नेक्स्ट स्टेप इज जिस 2 हमने इस साइड शिफ्ट किया है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4rg इज इक्वल टू vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर. उसके बाद हमें स्पीड एट पॉइंट ए मालूम है कितना है, va इज इक्वल टू अंडर रूट rg, जो इससे पहले वाले आर्टिकल में निकाला था. तो ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे va की जगह, एंड va सब्स्टिट्यूट किया तो एक ही वेरिएबल यहाँ पे बच जाता है vb, तो vb मिल जाएगा. सो लेट वी सब्स्टिट्यूट इन द नेक्स्ट स्टेप. आप देख सकते हैं यहाँ पे तो सेम इक्वेशन है, vb के लिए लिखा है, एंड देन आई कैन सब्स्टिट्यूट va. तो va मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, अंडर रूट rg, उसका स्क्वायर करेंगे तो rg बच जाएगा. तो यहाँ पे हमें मिल जाता है 4rg प्लस rg आ जाएगा 5rg. सो vb स्क्वायर इज 5rg, तो vb निकालना है, तो अंडर रूट 5rg, अंडर रूट 5rg, ये हो गया स्पीड एट पॉइंट बी. ठीक है, तो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल स्पीड. अभी देखिए हमने टॉप मोस्ट va जो आया था वहां पे भी मैंने मिनिमम बोला था, यहाँ पे भी मिनिमम. ये क्या है? तो यहाँ पे भी एक चीज याद रखो, अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो यहाँ पे स्पीड होना चाहिए इस पॉइंट पे अंडर रूट 5rg. अगर नहीं हुआ, उससे कम हुआ तो क्या होगा? अगर उससे कम है तो पार्टिकल जो भी ऑब्जेक्ट है ऊपर तक जाएगा एंड यहां से नीचे गिर जाएगा. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच डिस्टेंस इट कवर, इट डिपेंड्स ऑन दिस स्पीड. अगर ये अंडर रूट 5rg है तो ये कंप्लीट करेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन. अगर इससे कम है तो कहीं पे तो जाके नीचे गिरेगा, उससे ज्यादा है तो चल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट दिस इज द मिनिमम स्पीड. So this is the minimum possible speed at lowest point to complete vertical circular motion. तो ये हो गया
मिनिमम स्पीड। तो इसका मतलब हमने इससे पहले क्या देखा है, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड क्या था, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड हमें मिला अंडर रूट आर जी, और लोवेस्ट पॉइंट पे हमें मिला अंडर रूट फाइव आर जी। तो ये याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों स्पीड। उसके भी ले सकते हैं। सो इक्वेशन 2/1, 2 - 1, तो यहाँ पे देखते हैं वही करते हैं, इक्वेशन 2 - 1, ये 2 है ये 1 है, दोनों का सब्ट्रैक्शन लेते हैं। तो एक एक साइड हम लेंगे यहाँ पे, तो एक साइड हमने लिखा ये 2 और ये -1। अभी देखिए ये 1 का जो प्लस साइन था ये प्लस था, तो यहाँ पे ये साइन हमने चेंज किया है, अब देख सकते हैं माइनस हुआ है। ठीक है, मैं ब्रैकेट डालूंगा तो प्लस ही लिखूंगा, बट ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं यहाँ पे। उसके बाद ये साइड लिखा है हमने 2 - 1, तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये सिंप्लीफाई करना है एंड टी बी माइनस टी ए निकालना है। सो हमें निकालना है टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू हाउ मच। तो यहाँ पे देखिए ये एम जी माइनस एम जी और ये माइनस एम जी -2mg हो जाएगा, एंड यहाँ पे m बाय आर हमने इस इक्वेशन में से कॉमन लिया, तो वी बी स्क्वायर माइनस ये वी बी स्क्वायर माइनस ये वी ए है, वी ए स्क्वायर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, टी बी माइनस टी ए -2mg एज इट इज। तो वी बी कितना है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने इससे पहले भी देखा था। सो टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो स्पीड था अंडर रूट आर जी था, और लोवेस्ट पे था अंडर रूट फाइव आर जी। तो ये ए पॉइंट था और बी पॉइंट। तो वी बी कितना है, अंडर रूट फाइव आर जी, उसका स्क्वायर करेंगे तो फाइव आर जी आ जाएगा, वी ए का स्क्वायर करेंगे तो आर जी आ जाएगा। तो फाइव आर जी माइनस आर जी कितना आ जाता है, ये 4 RG। तो यहाँ पे 4 RG लिखा मैंने, ठीक है, तो ये ए है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आर और ये आर हमने कैंसिल किया, तो ये आ जाएगा 4mg, और ये -2mg उस साइड जाएगा तो +2mg, 4mg +2mg 6mg। तो ये हो गया डिफरेंस इन द टेंशन इज 6mg। तो यहाँ पे 6mg इज द डिफरेंस इन द टेंशन। बोर्ड एग्जाम में इससे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस इन द टेंशन एट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, तो ये आप लिख सकते हैं उसके लिए। उसके बाद and it is related to banking of road. Now what is banking of road, that we have to learn initially, and then we learn mathematics about this. So basically banking of road means outer edge of the road, you can see here outer edge of the road is raised to higher level than inner edge, and this arrangement of the road is called as banking of road. Now you can see in a picture here, so you can see this is inner edge of the road and this is outer edge of the road, and this is a vehicle, this is the horizontal road. But if we raise this outer edge with some level, then that arrangement of the road is called as banking of road. Now this arrangement of the road is called as banking of road. Now here, so this is surface of road now, and this is horizontal, and this angle is theta, and this angle is called as angle of banking. So this is very important term, angle of banking. Angle of banking means angle between surface of road and horizontal, or in another word you can say that the angle between inclined surface of the road and the horizontal is called as angle of banking. Now in this in the next article we have to obtain expression for angle of banking also. Now you can see here bank road, it's a racing track. So this is the outer edge is at higher level than the inner edge, and that arrangement of the road is the banking of road. So this type of arrangement we can make it to increase the speed limit on this curve path generally. So this is a racing track, so outer edge is maintained at more higher level as compared to the inner edge,
but you can see in a normal road also, on highways also, you can see the outer edge is raised at higher level than the inner edge. So here, when the vehicle is on the bank curve road, then banking of road means what? The arrangement of road in which surface of the road are tilted with the horizontal with some angle. This is called as banking of road. You can see here, this is a vehicle. Now here we have to discuss what are the forces acting on this vehicle when it is moving on the bank curve road. The first application is vehicle along a horizontal circular track. तो हमें एक व्हीकल कंसीडर करनी पड़ेगी जिसका मास है m, हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे मूव कर रही, जिसका रेडियस है ट्रैक का r, एंड मैक्सिमम स्पीड भी कंसीडर करेंगे. So the vehicle you can see in a diagram. So this is the radius r. So this is the velocity, maximum velocity of the vehicle is v, and vehicle का जो मास है m है. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल. कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं? तो पहला फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है वेट, जो व्हीकल का वेट है वो, विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड सेकंड फोर्स होता है, व्हीकल क्या कर रही है, इट एक्सर्ट अ वेट ऑन द सरफेस, एंड सरफेस व्हीकल के ऊपर क्या कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है. तो यहाँ पे सेकंड फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन. एंड तीसरा फोर्स है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड. अगर एक हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होना ही चाहिए. सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड. अभी देखिए सारे जो फोर्सेस है हम डायग्राम में दिखाएंगे. जनरली फिजिक्स में ऐसे पिक्चर वाली डायग्राम अलाउड नहीं होती. सो वी ड्रॉ द कंपोनेंट डायग्राम. तो व्हीकल दिखाएंगे, देख सकते हैं ये व्हीकल है, उसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उससे ये वेट एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यू कैन सी दिस वेट. उसके बाद सेकंड पॉइंट नॉर्मल रिएक्शन, यू कैन सी विच इज एक्सर्टेड बाय द सरफेस, एंड दिस इज द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. अभी यहाँ पे याद रखिए फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर. इट इज अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये जो रिएक्शन फोर्स है इट इज एक्सर्टेड बाय द सरफेस. नाउ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिखना है. आप देख सकते हैं ये एम जी एंड एन दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, बिकॉज व्हीकल इज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट. सो एम जी बैलेंसेस एन, तो हमें एक इक्वेशन मिल गया, एम जी इज इक्वल टू एन. दूसरा है सेंट्रीपेडल फोर्स रिक्वायर फॉर दिस मोशन ऑफ द व्हीकल इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. आप ये देख सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इट इज टुवर्ड द सेंटर. तो टुवर्ड द सेंटर जो होता है सेंट्रीपेडल फोर्स. तो हम लिखेंगे इसे सेंट्रीपेडल फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. हमें इक्वेशन 1 मिल गया, ये इक्वेशन 2 मिल गया. अभी दोनों का यूज करके हमें v निकालना है. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे. यू कैन सी हियर डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट. सो ऊपर मैंने 2 लिखा है, ये 2 वाला पार्ट है एक एक, एंड ये 1 वाला पार्ट है. डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे m गेट कैंसल. तो नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगा v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू एफ बाय एन. तो एफ बाय एन यहाँ पे क्या है, आर जी एन कॉन्स्टेंट होता है. v मैक्सिमम, फिर v मैक्सिमम कब आएगा, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा. अगर आपको वेलोसिटी ज्यादा रखनी है कर्व पाथ पे तो फ्रिक्शन ज्यादा रखना पड़ेगा. अभी देखिए इसके बाद हेंस वी कैन राइट v मैक्स. मैंने v मैक्स लिखा तो यहाँ पे भी मैं फ्रिक्शन को भी मैक्सिमम फ्रिक्शन लिखूंगा. उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो बाय लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, हमें स्टैटिक फ्रिक्शन का लॉ लर्न किया है. फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन था. ये हमने फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू एन. म्यू होता है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हम म्यू एस लिख सकते हैं स्टैटिक के लिए, एफ एस लिख सकते हैं फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए. तो उससे एफ बाय एन इज इक्वल टू म्यू, ये फॉर्मूला मिल जाता है. ये हमने 11 में लर्न किया. ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये जो दिख रहा है ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. तो उसके बाद हमें फॉर्मूला मिल जाता है वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू म्यू. तो उससे वी स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया म्यू आर जी.
तो इससे v लिखेंगे अंडर रूट म्यू आर जी, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर maximum velocity of vehicle along horizontal curve road. And you can see here this velocity independent on mass of vehicle. यहाँ पे मास ऑफ व्हीकल का टर्म नहीं है, तो इसका मतलब एक कर्व पाथ पे जो स्पीड लिमिट लिखता है, आप हाईवे यानी जो नॉर्मल सरफेसेस पे आप जाएंगे तो आपको लिखा हुआ होता है बोर्ड 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर. इट इज सेम फॉर ऑल व्हीकल बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द व्हीकल, यानी कार के लिए और ट्रक के लिए वही सेम है. फिर भी आप देखते हैं कि कार 60 से जाती है, ट्रक 40 किलोमीटर पर आवर से जाती है. इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों होता है? जनरली या रेनी सीजन में हम 60 से जा रहे हैं, तो हम नॉर्मल अदर सीजन में समर में हम 80 से भी जा सकते हैं. तो ये क्यों है? क्योंकि ये जो म्यू चेंज होता है, म्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. फ्रिक्शन चेंज हो गया तो ये चेंज करना पड़ता है. अभी देखिए रेनी सीजन में अगर रोड गीला है तो आप क्या करेंगे, स्पीड कम करेंगे टर्निंग पे. क्यों कम करेंगे? बिकॉज फ्रिक्शन कम हुआ है वहां पे. फ्रिक्शन कम हुआ है तो आपको स्पीड कम करना ही पड़ेगा टू टेक दैट टर्न. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. Now here, so banking of road, basically let the car move on horizontal curve road. I consider this is a horizontal curve road and car is moving on that. Then we have to discuss forces acting on car. Basically the first force is weight mg, so I can write small m capital M, it's okay. So weight is mg. Then second force is normal reaction, so it is a reaction force exerted by the surface. Basically normal reaction is perpendicular to the surface of road. So I shown first horizontal road, this is a horizontal road, but when the road is banked, you can see here this normal reaction is perpendicular to the surface of road. So the direction of this normal reaction you can see in a diagram. So this is a normal reaction and this is a weight mg. Now here this normal reaction we can resolve into two components. So the first component is n cos theta, which is the vertical component, and second component you can see in a diagram n sin theta. So this is the horizontal component. Basically you remember one thing here, always the adjacent component is in cos, and the same component, this sin component, we can show opposite to the theta also. So this is n sin theta. So here this horizontal component is in sin and vertical is in cos. Now after that, we have to discuss the third force acting on the vehicle, and it is a friction. So you can see here force of friction between tire and road. So this force of friction also we can resolve into two components, f sin theta and f cos theta. If this is a force, then obviously this angle is theta. Then adjacent component, so this is the adjacent component and it is in cos, so f cos theta. And the another component here, the opposite component, or here this component is in sin, so you can see f sin theta here. So this component diagram you try to understand, because we have to use this diagram while deriving a derivation. Now let's see a derivation here. So here we have to write maximum speed of vehicle on bank curve road without considering friction. See here, this is very important word, without considering friction. Now in this article, this is the point number 1. So here we are not considering friction. So friction is 0. So here we are considering only two forces which are acting on vehicle. First one is the weight and second one is normal reaction. Friction is 0, so we are not considering that frictional force. So consider a vehicle of mass m moving on bank curve road of radius r as shown below. So let I show you a diagram. So this is a vehicle which is moving on bank curve road. Now after that, forces acting on vehicle, the first force weight and second force normal reaction. Now here, so this type of picture diagram is not useful in the physics. We require component diagram.
So let I show you component diagram also. So before that, you remember here, we can resolve this normal reaction into two components. So basically, normal reaction is resolved into two components. First one is n cos theta and second one is n sin theta. Let I show you both in a diagram. So see the diagram here. So this is the center of gravity of this vehicle. Through that center of gravity, I shown weight in a downward direction, and this is normal reaction. These are the two forces. Now, after that, n is resolved into two components. So this is n cos theta and this is n sin theta, because this angle is equivalent to the angle of banking. So basically, here we get the component diagram. So we can write it more a proper component diagram also like this. So when you are drawing diagram in an examination, the vehicle is not important. The component is very important. So this is a vehicle. Then this is center of gravity of the vehicle. And through that center of gravity, I shown weight mg in downward direction. This is normal reaction, and it is resolved into n cos theta, n sin theta. So this is the angle of banking, and by geometry, this is also theta. Now here, by using this diagram, we have to write two equations, and these two equations we have to process to get a maximum speed formula. Now, so you can see a diagram very carefully, and you can write here n cos theta balances weight mg. You can see this n cos theta. It balances mg because vehicle is in equilibrium position. So here n cos theta and mg, they are balance each other. So we can write n cos theta is equal to mg, and this is the equation number 1. Similarly, we can write equation 2. Now here, equation 2 we can write in terms of centripetal force. Now you know that for any motion of vehicle on the curved road, centripetal force is essential. And centripetal force is along the radius and toward the center. अगर आप ये component देखेंगे, n sin theta, this is acting toward the center of the circular path of the vehicle. So this n sin theta is equal to the centripetal force. So I can write it here, n sin theta provides centripetal force. So we can write n sin theta is equal to mv square by r. तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन है यहाँ पे. तो वी हैव टू प्रोसेस दिस टू इक्वेशंस. क्या करेंगे हम? दोनों का डिवीजन लेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1. तो हमें क्या मिलता है देखते हैं. देखिए 2 डिवाइडेड बाय 1 करने के बाद हमें 2 का एक साइड लिखा है हमने n sin थीटा एंड दूसरा साइड है mv स्क्वायर बाय r. 1 का इक्वेशन 1 का एक साइड है n cos थीटा एंड दूसरा साइड है mg. तो डिवीजन करने के बाद यहाँ पे n आप कैंसिल कर सकते हैं, ये m यहाँ पे वाला m कैंसिल हो जाएगा. तो आपको इक्वेशन में क्या मिल जाएगा, साइन बाय कॉस टैन, एंड यहाँ पे ये v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg मिल जाता है. टैन थीटा का फॉर्मूला मिल गया v स्क्वायर बाय rg. तो उससे आप v लिख सकते हैं. तो v क्या आ जाएगा, देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू rg टैन थीटा, तो उससे v आ जाएगा अंडर रूट rg टैन थीटा. अभी ये क्या है? सो दिस इज द मोस्ट सेफ स्पीड ऑन बैंक कर्व रोड.